Hello everyone and welcome to Khel Now TV for yet another episode of Football Festival in the Desert. This is Vincent Aboubakar, Alex and Ashish Negi, and we are going to discuss about what all is happening in this World Cup. कल फिर से काफ़ी अपसेट्स देखने को हमें मिले, उलटफेर फिर से देखने को मिला हमें. ये वर्ल्ड कप अभी तक डिसअपॉइंट नहीं कर रहा है. द ग्रुप स्टेजेस आर ओवर. जी हाँ, आपने सही सुना, ग्रुप स्टेजेस अभी खत्म हुए और नॉकआउट्स अब शुरू होंगे. उसके बावजूद जो है काफ़ी एक्सेलरेटिंग मैचेस हमें देखने को मिले. तो शुरुआत करते हैं आशीष के साथ, जो आज फिर से काफी खुश होंगे क्योंकि आशीष, आपकी जो कल प्रेडिक्शन थी पोर्चुगल और साउथ कोरिया विल बी द टू टीम्स टू एडवांस फ्रॉम दैट ग्रुप हैज कम ट्रू. एंड साउथ कोरिया एंड मोमेंट में जो है उन्होंने यूरुग्वेन ड्रीम्स को जो है पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है. घाना ने रिवेंज नहीं लिया, लेकिन साउथ कोरिया ने एक तरीके से एक मीम देख रहा था ट्विटर पे, वो एक लड़की का, आई थिंक वो कोई एक्ट्रेस है, वो हंसती रहती है, आई थिंक यूएसए में वो टैलेंट शो था, फिर एकदम से रोने लग जाती है एकदम. तो कैरेक्टर घाना के फैंस के इमोशंस वैसे तुम मतलब उन्हें दुख तो था, कुछ बाहर हो गया, बट यू नो वो भी हम तो डूबे सनम, तुम डूबेंगे सनम, वो वाली बात हुई है. एंड आई थिंक वेरी प्राउड. मैं फिर बात करूंगा कि नहीं, 3 एशियन टीम्स, 5 एशियन टीम्स टूर्नामेंट में थी. कतार एज अ होस्ट आप कह लो, 4 एशियन टीम्स क्वालिफाइड थी, उसमें से 3 राउंड ऑफ 16 में गई है. ऑस्ट्रेलिया को आप अलग कर रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया भैया एशिया से जाती है यार, कहीं वो अलग कॉन्टिनेंट है. क्या दिक्कत टेक्निकली है? हां सही बात. क्वालीफाई कहां से हुई? अफगान, सॉरी एशियन. ऐसे तो टर्की है, अगर फुटबॉल खेलती हो तो यूरोप में नहीं खेलती है. इजराइल तो यूरोप में नहीं है. बहुत सारी टीमें हैं जो यूरोप में नहीं, वो खेलते हैं यूरोप में. तो उसका मतलब ठीक है, आप न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी की बात ही नहीं. जब उनके प्लेयर एशियन फुटबॉल में खेलते हैं, उनके क्लब एशियन चैंपियंस लीग खेलते हैं, एएफसी कप खेलते हैं, सब कुछ खेलते हैं, वो एशिया कप खेलते हैं. तो फिर एशिया की ही टीम है, फुटबॉल में एशिया की टीम है. अब तक कॉन्टिनेंट भूल जाइए किस कॉन्टिनेंट कहाँ है, क्यों नहीं है. फिर ऐसी बात हो गई, क्या बोलते हैं कई सारे कि ये यूरोप में नहीं है, फिर भी यूरोप में है तो हमको क्यों काउंट कर रहे हैं, यू नो. तो वो चीजें हैं. ऐसे तो फिर कैटोलिना स्पेन में नहीं है, उनके प्लेयर तो खेल रहे हैं. ऐसे आदित्य की भाषा में बोलूं मैं, एक छोटे से एग्जांपल ये है ना, आदि प्लीज ऑफेंड मत हो यार. एक छोटे से एग्जांपल ये हो गया ना, इम्बोलो जो है कैमरून के लिए, बट ही प्लेस फॉर स्विट्जरलैंड. तो सी एज अ सेट की कह रहे 6 एशियन टीम्स थी आई थिंक टोटल, एक इंक्लूडिंग यू नो कतार. 6 थी क्या? श्योर है. जापान, ईरान वाज देयर, सऊदी अरेबिया वाज देयर, उसके अलावा कतर एंड देन ऑस्ट्रेलिया बस. एंड देन हु एल्स वाज देयर? जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया. हां, तो आई थिंक दैट्स अबाउट इट. 5 टीम ना. यस. छठी टीम कौन सी कह रहे हैं? स्पोर्ट्स ओनली, बिकॉज़ वो भी रेगुलरली हमारा शो देखते हैं तो बताइए. बट यार जितनी भी टीमें थी, हैविंग 3 एशियन टीम्स यू नो गेटिंग क्वालिफाइड टू round of 16 is a great sign, considering if you see how many African teams have qualified from the group. You know, if you see Senegal has qualified, you know, only one, that makes the one, you know, Senegal. Then Morocco has qualified, that makes 2. That's it. Yeah. So if Africa, you know, it's kind of football powerhouse in terms of talent, you know, the amount of players Africa produce, the amount of African players plays for different countries, you know, even for Asian countries or European countries. I think great, very happy with the overall outcome till now. I think, of course, I was a bit disappointed with the Saudis, how they missed that golden chance, you know. As well as Iran, I guess. You know, and as well as Iran. So that's, yeah. So Iran, Saudi not qualified, Qatar 3, Japan, South Korea and Australia 16. Yeah, so sports one is right. So I think क्योंकि एक playoff slots भी होता है एशिया के पास. बाय द वे एशिया के पास 4.5 स्लॉट्स होते हैं वर्ल्ड कप के. इस वर्ल्ड कप में 4.5 स्लॉट का मतलब क्या है कि एक प्लेऑफ स्लॉट मिलता है. तो उसके लिए जो एशियन टीम वर्सेस आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का गेम था, किसी का गेम था जो था प्लेऑफ में, और जो प्लेऑफ जीतता है वो दूसरा 0.5 का स्लॉट दूसरे कॉन्टिनेंट के पास होता है. मोस्टली साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के पास होता है. एशिया का जो प्लेऑफ स्लॉट होता है, वो जो प्लेऑफ जीतता है, आई थिंक नॉर्थ अमेरिका के पास स्लॉट होता है, वो जो प्लेऑफ जीतता है वो क्वालिफाई करता है, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड कप में. तो आई थिंक ओवरऑल 8.5 किसका था? 8.5 अगले वर्ल्ड कप में एशिया को मिलने वाला है. अच्छा, वो अगले वर्ल्ड कप, अगले वर्ल्ड कप में जो 48 टीम्स का वर्ल्ड कप है तो उसमें मिलने वाला है. तो आई थिंक आई डिडंट फॉरगेट द एशिया नंबर 1. याद आ गया भाई, थोड़ा हो जाता है कैलकुलेशन में. तो ओवरऑल आई थिंक 3 टीम्स हु कैन से have made them. I think South Korea especially because उनकी स्टार्ट जर्मनी से ड्रॉ था उनका, if you remember, you know, and they were at the bottom of the group. No, not Germany, sorry, Uruguay से उनका ड्रॉ था. And I think that was a decent start, you know, and there is no way Uruguay should have gone ahead yesterday because see उन्होंने कल अपना पहला गोल मारा वर्ल्ड कप में. ऐसी टीम तो बिल्कुल नहीं क्वालिफाई करनी चाहिए थी. ठीक है, ओवरऑल. एंड यू नो साउथ कोरिया, द परफॉर्मेंस दे गिव अगेंस्ट पोर्चुगल वाज, यू नो, एक चीज होती है ना, they never say no, but they keep on trying. चीजें नहीं चल रही थी उनके लिए. They mixed the attack and I think what assist
assist of the tournament for me, Heung-min Son. Finally, your big players. I think what make you a big player? It's the performance in these kind of games. When it's a do or die, and sometimes the younger players, with less exposure, they commit mistakes. They don't have that decision making. And I've seen in this World Cup in situation like Heung-min Son, many times players dribble past, they try to shoot. Right. And that composure he had, to just see that, support is coming, I just need to hold. And to nutmeg, I think he nutmegged Dello. Yes. And I think देखो nutmeg कोई plan नहीं करता है. It's just happens. It just happened. And Right. sometimes अगर वही Dello का पैर लग जाता तो pass block हो जाता तो हम बोलते बड़ा bad decision by Son. Right. But that's football is all about if and but and but to show the composure in that situation when whole nations hope on you and you have not played well in this World Cup. Yeah. Right, and I was talking to my family, while watching that game, that I feel that his vision, when you wear that heavy mask, you're not seeing 180 Peripheral degree. zone आपका जो It's है. not 180 Right, degree for right. you like normally we have, and your vision zone is like this. And I when I was running with the ball, I my finger was crossed and I said, hopefully he will see that man arriving, because I was watching from the different angle. And when the goal scorer arrived, I think that the composure for Heung-min Son to pass that ball, and that's the reason. That's why he's the best Asian player. That's why he plays at the Premier League at the top level, compete for the best awards in the Premier League. Right. He's one of the best Premier League player, in the last couple of seasons. So Asan is the best Asian player, and I think. We'll come to the next game, Switzerland and Serbia also. And I kept on saying your big player need to stand up, and we have seen now the big players coming to the party. In the other game also, all the big players they played their role, and and that's what we can see. Heung-min Son, fantastic assist. For me, the assist of the tournament. It's not because of the quality or something. It's just the timing of it. Right. Whole nation is watching you and. To make that run. If you remember, I think before that goal, Uruguay was going through and there was celebration was there from Uruguay fans, South Korean fans were crying and everything, and कुछ भी नहीं चल रहा था South Korea के लिए. Right. The attacks were not coming through. Portugal also stretching them, keeping the more ball, and I think to put that pass for that, for that Wang, and it was fantastic, overall approach from Heung-min Son, and I think this shows that why he is, one of the best player from Asia and why he's one of the top player in the Premier League. And I think we can't say that कि Portugal ने B team खिलाई, ये खिलाया, वो खिलाया. I think it's a World Cup. It's a do or die for everybody, and I think ultimately it was not like a lottery which Tunisia got. Right. It's not a completely changed Portugal team. They still have Dello playing with a fantastic assist for the first goal. Cancelo was there, Ronaldo was there. Pepe was there who played in the last game. Right. Ronaldo was there. Of course, they did rested Felix, Bruno, and I think another midfielder of, if I remember, there was I think William Carvalho was Carvalho also not playing, not right? there. These three were the major part of the midfield, but overall, very decent Portuguese team. Yeah. Cristiano Ronaldo was still playing. And maybe people must say it's a good thing for nowadays opponent team if Cristiano Ronaldo is playing for the liability he has been for the, and this is not a jibe on Ronaldo, but maybe, sometime, but he is still a major threat up front, and to keep him quiet, it's not easy. So I think South Korea के साथ ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो attack कर रहे थे. Overall, they had to defend, and Portugal scored the first goal. Yes, at the 5th minute. And Portugal scored the first goal, and I think very happy with overall Asian India. And मुझे Alex मेरी तरफ देख रहा है कि आप कितना बोलते हो. No, carry on. I think मैं to sum up, it's just my emotion. I think very happy. Right. I think they still have fight in them. All the teams, and tonight Australia is playing, and I consider Australia more Asian than anybody else, and I think there is majority people here might be around me will support Argentina, but I feel that Australia, the performance they have given in this World Cup is going under the radar. USA of course has done fantastic to be that team, but you have to remember which group Australia has come through. They lost against France, I agree, but the performance first half against France, I'm sure France have not feel that kind of competition in last couple of years. Yep. The performance Australia gave in that first half was fantastic, and of course France had that overall quality to outscore any team if they want, because of the kind of quality they have. So I think overall fantastic from the South Korea side. It was a very even out game. Both the teams created 4 chances, and I just wanted to see the expected goals. South Korea had the 1.22. and Portugal at 1.04. So I think it shows that the game was very even, very tight, and ultimately it was the quality of Heung-min Son, which kind of created the difference, and the very good finish also. By Wang, yes.
Over to you guys now. यार एलेक्स, एक तो सबसे पहले मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई एशियन टीम गलती से वर्ल्ड कप जीत गई या इवन सेमीफाइनल या फाइनल तक आ गई तो आशीष भाई 1 घंटे का शो अकेले कर लेंगे, इतना मुझे पता है। I'm planning another show which is nothing to do with you guys. It's an Indian football show which of course I do regularly. Yes. And I think it's going to be a rant over to the European fans and the Africans and the experts that why Asia, you know, because this is a big question because see 8.5 मेरा घर का कोई फायदा नहीं होने वाला है। नहीं बिल्कुल। I completely understand. It's overall continent and the size of Asian. We have a see आप नंबर ऑफ टीम्स देखना एशिया में कितनी, एशिया का वर्ल्ड कप क्वालिफायर सबसे पहले स्टार्ट होता है बिकॉज एशिया की 47-48 टीम्स हैं क्वालिफायर स्टार्ट होता है। एशिया देखिए यूरोप में ना क्वालिफायर्स कैसे होते हैं, सीधे ग्रुप स्टेज चालू होते हैं। एशिया में फर्स्ट राउंड होता है नॉकआउट राउंड, बॉटम 12 टीमें जो एशिया की बॉटम 12 टीमें नॉकआउट खेलती हैं जिनका भविष्य अगले 3 साल के मैचेस एक मैच में डिसाइड हो जाता है। राइट, द साइज ऑफ आवर कॉन्टिनेंट इज सो बिग, तो इनके नॉकआउट्स पहले से शुरू हो जाते हैं, वर्ल्ड कप से पहले पहले मैच में ही एक पहला राउंड प्लेऑफ राउंड होता है जिसमें 6 टीमें बेचारी नॉकआउट हो जाती हैं, फिर होता है ग्रुप स्टेज स्टार्ट, फिर एक और राउंड होता है और फिर एक और राउंड होता है जब जाके फाइनल टीमें डिसाइड होती है। तो ऐसा नहीं है कि एशियन टीम्स मजे में क्वालिफाई कर जाती हैं। देयर इज अ रीजन व्हाई ऑस्ट्रेलिया लेफ्ट ओशियाना कम टू एशिया टू प्ले these games and that's what made Australia a better team now. Yes, you know, so it's an achievement of AFC overall. AFC as a continent to see Australia doing this well, considering Australia is of course different continent. I'm not claiming Australia is a part of Asia, but Australia is definitely part of Asian Football Confederation, which is AFC. That's what I want to say. I'm not saying that they're part of Asia as a landmass. Yes, so like So Ashish if Japan or South Korea wins this World Cup, you will rename your show as Outside Indian Football then? नहीं तो see Indian it's somehow मैं देखो मेरा एक थ्योरी है, आई एम अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, वो मैं क्यों हूँ मुझे भी नहीं पता है, ठीक। और मैंने स्पेशली क्योंकि देखो ये इसके पीछे हमारे कोई रीजन नहीं है, ऐसा नहीं मेरे बाप दादा मैनचेस्टर यूनाइटेड को सपोर्ट कर तो हम ब्लड से कोई प्लेयर पसंद आ गया, मैनेजर कोई ब्लड नहीं है हमारा कि कोई बंदा ऐसे स्पेन को चीयर कर रहा है। I understand केरला और बंगाल 2 स्टेट हैं, even Goa also third state. Goa, of course, majority support goes to Portugal because they've been the Portugal colony and you know there's a Portuguese connection in Goa, and of course Goa and Portugal share that economical political bond also because all the Goans have free access to Portugal market as a to study, to go to work there. They have like a permanent residency in Portugal because of the colony of Portugal. So Goa and Kerala और बंगाल की कहानी है कि I understand उनमें ब्लड में है कि बाप दादा अर्जेंटीना और ब्राजील को सपोर्ट करते आ रहे हैं, तो इसलिए हम करेंगे, इसलिए वो करते। It's a family tradition. For other people like us, you know, and I don't know. See, मैं throughout these last 3 वर्ल्ड कप 2010 से मैं स्टार्ट करता हूँ जब मैंने सीरियसली वर्ल्ड कप देखने चालू करे, एंड फर्स्ट वर्ल्ड कप वॉच वाज 2002 बाय द वे, जब दूरदर्शन पे वर्ल्ड कप आता था इंडिया में और कुछ ही चुनिंदा मैच आते थे, सारे मैचेस भी नहीं आते थे। तो मेरे कोई रीजन नहीं है किसी को स्पेन जर्मनी को सपोर्ट करने के लिए, मैं देखता था कि मुझे कौन से प्लेयर पसंद है। 2010 में आई रियली लाइक डेविड विया व्हेन ही प्लेइंग फॉर स्पेन, तो आई वाज रूटिंग फॉर स्पेन। 2014 I was was rooting 2 teams, Netherlands and Germany, because Robin was my favorite player in that time duration, and of course Germany I really like Müller, you know, and because of Müller, Thomas Müller, and because of success in 2010 World Cup, so these 2 teams I was cheering up. 2018 of course Pogba, Martial, Manchester United fan, so considering I was hoping that France will do well. Pogba, and I really like Pogba as a player, irrespective of what he has done off the pitch. I still feel the kind of midfielder Pogba is still, we don't have that kind of midfield in the world. I think the previous midfielder other than Pogba who has that kind of quality was Zidane, I'm not comparing both of them, but Zidane was similar, has that impact in that midfield to win and lost the game, irrespective of what they do. If they play bad, the team will lose, and so see मेरा सिर्फ ये रहता है कि मैं किसी प्लेयर को देखूं जो मेरा फेवरेट प्लेयर है, so I think I will feel more connected. And then last 5-6 years जब से मैंने of course खेलना स्टार्ट हुआ, the amount of work that I put on the Asian football, Indian teams जाती हैं youth level पे, senior level पे, and I watch many of these kids. अब बच्चे जब जापान के फॉर एग्जांपल जो प्लेयर है मैंने इनको अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 लेवल पे खेलते हुए देखा है। कतार के जो लड़के हैं जो सीनियर टीम में खेल रहे हैं उनको मैंने देखा है यूथ लेवल में खेलते हुए, so there is more connection for me towards them, and मेरा को लेना, मैं जापान जीते, मैं कौन सा मुझे जापान वाले पैसे ट्रॉफी लाके मेरे हाथ में देने वाले, it's just that कि I feel that I'm more connected to those players because I followed Asian football, and I'm watching Asian football, so I think वो एक connection वो है, तो मुझे कौन सा वो ट्रॉफी मिलने वाली है, पर I will be happy if Asian team do reach semi-final. It was the South Korea who reached semi-final in 2002 World Cup, so it's a long wait for Asian football, and it will be a tight slap on the Western experts who feel that Asia don't deserve 8.5 slots. And I think this is already a type slap from the Asian teams, because considering only 2 teams from Africa has qualified, And I think 2 South American nations, if I'm not wrong, or are there more?
No, only two. Only two Argentina and Brazil. That's because South America and Europe are the two confederation who has been saying no to Asia getting 8 points. So they feel that Europe and South America should get more slots. They have been claiming that the team who are not qualifying from Europe and South America are better than the team who's qualified from Asia. So अभी मैं quickly एक second और लूँगा to see that Japan has qualified on the cost of who? Germany and Spain. यूरोप से स्पेन चलो 2 है तो क्वालिफाई जर्मनी यूरोप की टीम है ठीक है देन साउथ कोरिया क्वालिफाई ऑन द कॉस्ट ऑफ हुम उरुग्वे साउथ अमेरिका वंस अगेन सी एंड द थर्ड टीम हमारी जो है उसके अलावा जो क्वालिफाई की है वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया हु हैज क्वालिफाइड डेनमार्क एंड ट्यूनीशिया तो हाउ कम द एशियन आर लेस राइट if Asian team somehow knocking out your Germany who's not defending but 2 साल मतलब दूसरे एक पिछले एडिशन में चैंपियन थी तो why you are saying Asian teams are less? It's just Asian में फुटबॉल डेवलप करना is a big complicated system. To do a traveling from Japan to Saudi Arabia to play a game is like a traveling from one part of the world to another part. तो जो difficulties एशिया में है फुटबॉल डेवलप करने की वो कहीं और नहीं है भाई जो इतने मल्टीपल टाइम जोन्स है हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल जापान में कब सुबह होती है और यहाँ सऊदी अरेबिया में कब शाम हो रही है तो यूरोप तो एक ही टाइम जोन में है मेजॉरिटी यूरोप 1-2 घंटे का डिफरेंस है सेम विद दी साउथ अमेरिका हमारे यहाँ देखो ना यार टाइम जोन के तो ये छोटी छोटी डिफिकल्टीज हैं जिसके लिए फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जो AFC चैंपियंस लीग होती है वो 2 कॉन्फेडरेशन में होती है वेस्ट वर्सेस ईस्ट बिकॉज अगर ईस्ट का क्लब बेचारा आपने संडे को मैच खेला अबे मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल कितने रोते हैं कि हमारे भैया हमने थर्सडे को मैच खेला वेडनेसडे को मैच खेला मैं सैटरडे को गेम रख दिया 3 दिन का ब्रेक जस्ट इमेजिन जब अगर हमारे यहाँ जो चैंपियंस लीग होती है फॉर एग्जांपल मैं इंडियन क्लब्स की बात कर लूँ या इंडियन या से अगर कोई कॉन्फेडरेशन नहीं होता फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन अ इंडियन क्लब गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया टू प्ले अ चैंपियंस लीग गेम on Wednesday and Thursday coming back to Indian play a game on a Sunday. How difficult would that be? तो वो जो यूरोप वाले 2 घंटे की फ्लाइट में रोते हैं या 8-8 घंटे की फ्लाइट खेल के प्लेयर्स मैच खेल के दोबारा मैच खेलते हैं यार तो हमारे चैलेंजेस दूसरे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हम मे बी एशिया इज लेसर in terms of we have not won the World Cup. Africa has also not won the World Cup. It only took 2 continents who have won the World Cup till now. But that doesn't mean that Asia के साथ आप racism करोगे just because maybe cricket is a major sport in some part of our part of the continent. Right. But that does not mean that Asia do not deserve these slots. Asian teams have made their present felt throughout these previous editions of the World Cup. And this World Cup, I think, other than 2002, looks like the team World Cup for the when Asian teams are doing well. Eventually, if you see Saudi are knocked out, they have defeated Argentina. Yes. And Iran. Even they defeated Wales, which another Europe team, and maybe Qatar. Again, they were host. They didn't qualify on merit, so we can't count Qatar performance. Overall, that of course they were representing Asia, but they didn't qualify on merit. They qualified as a host. So I think overall, great World Cup till now for the Asian teams. And just to say that Asia deserve 8.5 slot. That's it from my side. एलेक्स क्या कहना चाहते हो यार इसके बारे में क्या कहते हैं मतलब मैं पहले तो अपने सारे जो व्यूअर्स से ही कहूंगा सो गाइस हिट लाइक इफ यू वांट टू सी आउटसाइड इंडियन फुटबॉल और इनसाइड एशियन फुटबॉल नाउ या कल का जो साउथ कोरिया वर्सेस पोर्चुगल था पहले लाइक कितने 4th 5th या 7th मिनट में आई थिंक गोल पड़ गया था It was in the 5th minute by Horta. Yes. Yeah, तो excuse me उसके बाद मेरे को लगा अच्छा 4 से 5 गोल हो सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ही बिकॉज काफ़ी मुझे क्विक फ्लेयर दिखी पोर्चुगल वाली साइड से तभी फर्स्ट हाफ मेरे को थोड़ा सा स्लाइटली सो लगा लेकिन सेकंड हाफ में भाई साहब से थोड़ा सा पहले कोरिया ने आई थिंक पिकअप करना शुरू कर दिया था इक्वलाइज हुआ एंड फिर अगर कोई साथ साथ मैच भी देख रहा हो टेबल भी देख रहा होगा तो गोल टैली जैसे जैसे ऊपर नीचे हो रही थी वैसे वैसे उनकी जो स्टैंडिंग्स है वो भी ऊपर नीचे हो रही थी सेकंड हाफ लाइक साउथ कोरिया वर कंप्लीटली वैसे डिफरेंट वो उन्होंने कुछ खास पोर्चुगल को चांसेस क्रिएट करने दिए ही नहीं दे वर लिटरली फाइटिंग फॉर द बॉल ट्राइंग टू कीप द पोजीशन वगैरह वो वाली सारी चीजें उन्होंने करी एंड उनके साइड से जो इंटेंशन दिख रहा था पूरा ही दिख रहा था कि हाँ अब जो है हमारे पास यही बिल्कुल 45 मिनट्स रह रहे हैं और इसी में हमारे पास चांस हम क्वालिफाई कर सकते हैं एंड डेफिनेटली बाय ह्यूमिंग सॉन उनको बोलते रहते हैं हम कि लेफ्ट विंग पे ना के लिए नंबर 10 करके लेकिन कल भाई उनका गेम कल काफी बढ़िया था एंड कल वही है साउथ कोरिया एज अ टीम काफी बेटर थी ये है एंड मीम्स बहुत चल रहे थे इसके रिगार्डिंग कि जिन्होंने क्रिश देखी है
तो ऋतिक रोशन ने जिनको अपना ब्लैक वाला मास्क दिया था वो ह्यूमिन सॉन है, उनके पास ये सुपर पावर आई और कल जितवाया उन्होंने। वो भागे भी उसी तरीके से आखिरी में, आई थिंक कितने यार्ड्स भागे होंगे वहां पे। एंड नहीं, नंबर 10 की बात आप कह रहे थे एलेक्स, अभी जस्ट मैं पोजीशनल अवेयरनेस देख रहा था, मैं थोड़े ग्राफ्स देख रहा था। हेung-min Son have switched his position at least 3 to 4 times from right to left wing, left to right wing। फ्री रोल मिला हुआ था, फ्री रोल नहीं, मतलब उन्होंने सब्स्टिट्यूशन किए थे तो हेung-min Son राइट पे भी आ गए थे क्योंकि उनके बाद उन्होंने लेफ्ट विंगर लेके आए थे दूसरा, फिर दोबारा एक वो लेफ्ट पे गए। अल्टीमेटली जब गोल हुआ है ना, जब साउथ कोरिया ने गोल मारा तो उनकी फॉर्मेशन क्या थी, 3-4-2-1। हेung-min Son was playing the number 10 from the right hand side, राइट। so I still feel राइट से ही भागते हुए आए थे। साउथ कोरिया को somehow have to give him the number 10 free role, you know, or a secondary striker role, give him the freedom. Yeah. He is your star man, give him the chance to shine, and I think he still has not scored the goal. I have a feeling that he will score goal in this upcoming, now there's only one game, you know, if they don't win it, they are out. Yeah. But I think that against Brazil. It's against Brazil, so see, never say never. You know, they have defeated Portugal, so one of the contender to the World Cup. So you know, I know it's against Brazil. I hope they give Heung-min Son some free role in that number 10 position, secondary striker, where he can make more impact, and he has made that impact yesterday from that same role. Well, definitely Heung-min Son had that influence, but इतना बड़ा influence था कि यूरुग्वे को भी उन्होंने बाहर निकलवा दिया, because यूरुग्वे खाने में क्या हुआ था एलेक्स, तो बेसिकली सबसे पहले आंद्रे आयू को एक पेनल्टी मिली थी, और वो फ्लैशबैक्स 2010 को होता है ना, वॉर फ्लैशबैक्स, वियतनाम फ्लैशबैक्स, वैसे ही गाना के पास क्या हुआ था, पेनल्टी फ्लैशबैक्स आने लगी थी और बहुत ही खराब पेनल्टी थी, एंड देन यूरुग्वे टुक द गेम अवे फ्रॉम देम थैंक्स टू अ ब्रेस बाय डी अरेकेस्टा। एक 26 मिनट पे और एक 32nd मिनट पे। तो द थिंग वाज कि यूरुग्वे वो क्रूजिंग, उन्होंने बोला कि क्लीन शीट रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-0 रखेंगे, आप आराम से जीतोगे, साउथ कोरिया आर ऑलरेडी लूजिंग, और इनफैक्ट ड्रॉइंग टू पोर्चुगल के पास हैवी पावर है। बट सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या हुआ, जो वो लेट गोल हुआ है ना 91st मिनट में जो है, यूरुग्वे डिड नॉट हैव द टाइम टू एक्चुअली रिस्पॉन्ड आफ्टर दैट, क्योंकि उसके बाद उन्होंने सारी बॉडीज आगे रखाई। अगर वो शायद इंटेंशन पहले होता कि हमने 3 गोल्स मारने मिनिमम, इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी, बट घाना वुड डेफिनेटली बी हैप्पी। उनकी हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते वाला डायलॉग उनको कहना पड़ेगा मेरे हिसाब से, बिकॉज यार सुआरेज की जो आंसू थे उनको देख कर इतना खुशी होगी, इतना आई थिंक वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी नहीं मिला। अरे ये बड़ा ही सैडिस्टिक कमेंट था, बट या बहुत सारी फिर वो यादें ताज़ा हुई। पहले तो फिर वही पेनल्टी मिस हुई, एंड आई थिंक उस टाइम भी सुआरेज को रेड कार्ड मिला था। आई थिंक कल भी सुआरेज को आई थिंक येलो कार्ड मिला था, आई थिंक कल भी उन्हें कल मिला था जी। या उरुग्वे का मैं वही बोलूंगा यार, हम जब प्रीव्यू में बात कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा उनके बारे में वो बात करती थी कि ऑफेंसिव स्ट्रेंथ इनके पास काफ़ी ज़्यादा है, बट पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने कुछ खास क्या बोलूँ, उन्होंने इतना कुछ यूज़ ही नहीं करा अपना ऑफेंसिव स्ट्रेंथ। वेलवर्डे पर काफ़ी वो था कि मैं तो बोलूँगा उन्हें अच्छे से यूज़ ही नहीं करा, जिस हिसाब से वो मैड्रिड में खेलते हैं उसी सेम लिहाजे से वो यहाँ पर उरुग्वे के लिए खेले ही नहीं है। तो जो फायर पावर उनके पास है उरुग्वे की, अगर वो अच्छे से उसे थ्रू आउट द टूर्नामेंट यूज़ करते ना तो मोमेंटम बिल्ड हो चुका होता कल तक, एंड वी नेवर नो कल शायद 3 गोल आ भी सकते थे। तो या इतना ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच आई थिंक उरुग्वे के साइड से तो मैं तो बिल्कुल वो नहीं हूँ कि उन्हें रखना चाहिए था। और या ऑफेंसिव आइडेंटिटी अगर आपकी एक टीम लेके चल रही है तो डेफिनेटली यू हैव टू लिव अप टू इट। या और 2 और मैचेस हुए थे, क्विकली इनके बारे में भी बात करते हैं आशीष, बिकॉज आफ्टर दैट वी हैव टू टॉक अबाउट नेदरलैंड्स वर्सेस यूएसए एज वेल। तो स्विट्जरलैंड वर्सेस सर्बिया हुआ था रात में 12:30 बजे, एंड ब्राज़ील वर्सेस कैमरून, एंड फिर से हिस्ट्री बनी वहाँ पे। कैसे? Cameroon became the first African nation to beat Brazil in a FIFA World Cup final. So another remarkable feat over there. Unfortunately, they were not able to qualify because Switzerland जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त जीत 3-2, and that was an interesting game as well, क्योंकि पहला गोल मारा आपके शकीरी ने, उसके बाद 2 back-to-back goals by Mitrovic and Vlahovic, and then Switzerland bouncing back as Embolo and Freuler scored in the 44th and 48th minute. So और काफी टेम्परेचर्स भी राइज हो रहे थे वहाँ पे, आप देख रहे थे। As I said, the big players to stand up in this game, all the big players have stand up, you know, all of them. Embolo, we talked about Embolo in the first video, you know, I touched upon that. Yes. He, when was the 15-16, was termed as the next big superstar from Europe. And I think looks like finally he has, you know, of course I'm not saying the next books, but finally reached a level that people will talk about him. Yep. You know, for the next, that he, once he make the next mega move from in the club football, I think he's going to go for a big club, you know, and he's shown in this World Cup that he's a quality player. And I think overall, if you see the goal scorers for, you know, Mitrovic, scored for Serbia, the Vlahovic, who is also a big signing for in the Serie A for Juventus, has scored, you know, and there was a, you know, only question mark is that
could they have Serbia have kept their attacking player more on the pitch? You know, I think Vlahovic came. He got substituted right after the 57 minutes. Right, he started the game or he came from the bench. No, he started. But then he left early. Yes, 57. yes. I think could they have, you know, they were leading right earlier and then they changed quickly. You know, because you have to keep the attacking threat on the pitch. Because I was into the Brazil game and in between I was switching to the game, and I think it was overall, if even from Switzerland side, if Sakiri scored, big player, Imbalo scored, big player, Xhaka made that impact, you know, as a defensive midfielder. So I think finally we can see these big stars coming into foray. We have not seen Ronaldo coming into foray, but you know, other countries, whoever their leaders are, they're doing well in this World Cup. And I think overall, I will feel that, you know, Switzerland deserve to go through to the next round. You know, maybe Cameroon only with one victory against Portugal, or against Brazil. Of course, they're playing the second-sided Brazil team. Yes. But I think it's a great moment for the country also. And I just wanted to, you know, Peter Dury की जो commentary थी उस goal के लिए, I think it was one of the master class, you know, for Peter Dury, and I think was fantastic. If somehow people can go and listen to what the words were, it was amazing. I was getting a goosebump, you know, just the way he have described that goal, the importance of that goal for Cameroon. If you remember, the Eto'o same time was shown on the TV, and he was celebrating and just going on to find on his phone where they score in the other match. This is the World Cup is all about, the emotions, you know, and I think good quality 2 games, and I think overall I feel Switzerland have done enough throughout the World Cup till now to go through as a second team. I think they deserve to go through as a second runner-up from this group. Right. So Ashish made a very good point. Alex ये कह रहे थे कि it's a historic moment for Cameroon, of course, and it is a big win. Although it was Brazil's second strings team, I still feel that इस टीम के साथ वो एक और टीम बना सकते थे, वो टीम भी शायद क्वालिफाई हो जाती राउंड ऑफ 16 में. So it was a really good team. And yeah, Vincent Aboubakar, what an impact he has had in the World Cup for Cameroon. In the previous game, he had a goal and an assist as soon as he came off the bench. And in the previous game, you saw that header. तो मतलब एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कैमरून की तरफ से. अबू बकर को अगर हमने पहले भी देखा है तो फिर वो बिल्कुल वो रहे हैं, अगर वो सब्स्टिट्यूट होकर भी आ रहे हैं तो भी काफ़ी डिफरेंस मेकर हैं और एकदम चांस क्रिएशन वो बिल्कुल जाते ही है सीधा चांस क्रिएट करने के लिए. पर फिर वही है, कल ब्राज़ील के उस गेम के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, बिकॉज ऑलरेडी क्वालिफाई कल कर चुके हैं. कल उन्होंने दूसरी टीम खिला ली. मार्टिनेली वाज गुड, 2 चांसेस समवॉट उन्होंने क्रिएट कर लिए थे. फबिनो ने अच्छा खेला कल और बाकी हाँ, एंड आई थिंक ही इज ऑल्सो इंजर्ड, आई थिंक. हाँ, तो चलो उस क्या है ब्राजील के कोच का नाम क्या है, टीटे. हाँ, उनके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी थी कि भाई मैं एक्सपेरिमेंट कर लूँ, तो कल उन्होंने वो कर लिया. कैमरून ने फिर आई थिंक लास्ट मोमेंट पे उनका भी गोल आया था at the 90th minute if I'm not wrong. इंजरी टाइम पे ही आया था. हाँ, उनका भी लास्ट मोमेंट पे गोल आया एंड पहली अफ्रीकन नेशन बन गए जिन्होंने ब्राजील को बीट कर दिया. सो उनके साइड से फिर मेरा कुछ वो था नहीं, बिकॉज ऑलरेडी क्वालिफाई वो हो चुके ना, तो इतना स्टेक्स पे था नहीं. तभी मेरा जो मेन फोकस था, और मैं कल भी बोला था कि सर्बिया और स्विट्जरलैंड, आई विल बी रूटिंग फॉर सर्बिया, क्योंकि फायर पावर बहुत है उनके पास. अगर आप वो देखो, मित्रोविक एंड ब्लैकोविक एंड एक और है ना उनके पास, सेरेज मिलिकोविच. हाँ, या वो भी, तो वो काफी उनके पास वो थी. मेरे को लग रहा था डू एंड डाई सिचुएशंस में वो अच्छी फायर पावर हो सकती है. 2 गोल उन्होंने मार दिए, बट सर्बिया का डिफेंस आई डोंट थिंक इट्स रियली अप टू द मार्क. वो बिल्कुल वो नहीं था कल, या फिर ये बोलूँ थ्रू आउट द टूर्नामेंट. बल्कि स्विट्जरलैंड में बोलूँ, दे रियली एक्टेड एज अ टीम. उन्होंने अटैक भी एज अ टीम करा, एंड वही है बिग प्लेयर्स दे शाइन इन बिग मोमेंट्स. तो कल वही हुआ, बट सर्बिया से मैंने थोड़ा और ज्यादा एक्सपेक्ट करा था, तो मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट थी वो. Well, so group stages are done. Round of 16 is about to start within 10 minutes, and the first game is between Netherlands and USA. We are going to have a discussion about that game. The lineups have also been announced. तो उसके बारे में भी अभी बात करेंगे, लेकिन एक few stats I just would like to share with everyone. तो लुई वैन गाल, ऑल्दो मतलब पिछले कुछ गेम्स में थोड़ा सा फायर नहीं कर पा रही नेदरलैंड्स, बट लुई वैन गाल इज स्टिल अनबीटन इन हिज लास्ट 10 वर्ल्ड कप मैचेस एज कोच एंड इज ओनली बिहाइंड फिलिप सोलारी एंड मारियो जागोलो. एंड एज फॉर यूएसए, एक स्टैट उनके फेवर में ये है कि टाइलर एडम्स, यूनुस मूसा एंड मैकेनी हैव कंप्लीटेड 75% ऑफ द पासेस, एंडिंग इन द फाइनल थर्ड. 7th behind Spain, Argentina, Portugal, France, Germany and Brazil. So that's actually great company for the USA. तो यार मुझे honestly लग रहा है, Ashish, let's start with you. I honestly feel that it's going to be a tight game. It's going to be neck and neck. And see, I know you do admire Louis van Gaal, but
the lack of the chances haven't been created for Netherlands in this World Cup. Gakpo, of course, जितना भी उनको minimum मिल रहा है, he is converting those chances into goals. Do you think that Netherlands team is going to have a problem against a resilient US defense? I think USA has played as a team very well throughout the World Cup, and the one team which, of course, and as I said, जैसे आपको एशियन टीम सरप्राइज लग रही है, मुझे यूएसए थोड़ी सरप्राइज लगी, but I have not watched them at all. ठीक है, I was overall aware of their the quality of development work they have done at the college soccer level, school soccer level, the MLS. Aware of some of those players, but I've not seen them. आप भी सॉकर बोलने लगे? उनका सॉकर ही बोलते हैं ना, इसलिए equality, Romans, in your room. So overall, I was aware of that, and aware of some of those players I've seen, and watching at the club level. But they have surprised me. They look like a resilient team who don't want to get concede goals, who wants to stay together, and I think who likes to play for 1-0, 0-0 matches. They don't want to score too many goals. They also don't want to concede too many like goals. to keep the game, take the game deep, basically. Deep and very tight. Now, there's a twist today, because of course, there's a penalties into 4 now. All right. There is no draw anymore. Okay. So, a team like USA will fancy this. If they can, and I'm sure... extra time will also be there. उससे पहले, of course. They can, but penalties तक game जाता है, Right. result आज आएगा ना, draw नहीं होगा, right? Definitely. That's what I mean. Right. So USA will, the team like USA will feel now, this is a golden opportunity for us. Let's keep the other team quiet for 90 plus 30 minutes, and then penalties are lotteries. Yep. And I tell you one more thing. The teams who are lesser teams, they practice penalty better. Yes. And because the players... More chances of them actually. Because they and this is an overall record also between penalties, overall in international tournament, club football also. The lesser known players, they do put lots of hard work on their penalties and these kind of stuff, and I think I have a feeling that this game will be very neck to neck game. But even if I think if decided it will be 1-0 in favor of any of those teams, and I feel it might be Netherlands, because again the reason is for me the coach. I think I really admire Louis van Gaal, and what he has done throughout for football and his life. His press conferences are damn funny still. Each and every press conference this World Cup, he's hugging people. He is saying, I will cheese. Let's get a photo के लिए बोल रहे थे पिछले press conference में. Let's meet after. We'll say cheese together. I think he is the personality you need in football. Right. Mourinho, Louis van Gaal, they keep football alive outside the football pitch. And with Depay back into full fitness now, I think Depay and Gakpo has started. Yes. Kalasan has a very good World Cup. Even flopped in Premier League. He's former Everton player. Flopped in Premier League. Went back to Ajax. Doing well with Ajax. I think De Jong, De Roon, Dumfries, blend. So it's a typical back three for 3-4-1-2, yes, the formation. There is no doubt over that Louis van Gaal will play anything different. He will play 3-5-4. That's his favorite formation. Yes. Throughout his time he has played that. वो दिन ही कहीं सूरज कहीं और मतलब sun will rise at west. If Louis van Gaal for a big games will try 4-3-3 with the 4-2-3-1. Because बहुत critical रहे in Dutch media, and Dutch people feel and media feel they are the creator of football in terms of the total football they have invented. So they feel that they should be quality of football by their national team, which they are proud of. But I think this is a great match. I think I'm looking forward to it, but I hope Netherlands win it. All right, so that's Ashish's take, Alex. So like we said, 3-5-2 formation है आपके Netherlands का. USA on the other hand are going with the classic 4-3-3, and like I said, उनकी midfield try जो है उन्होंने काफी headlines में और अपना नाम जो है रोशन किया एक तरीके से USA के लिए भी. So what's your takeaway? Christian Pulisic, we all know he is going to be the danger man from USA's end. So are we expecting another upset tonight, or is it going to be Netherlands? डेंजर क्रिश्चियन पुलिसिक से ज़्यादा मेरी जो निगाहें हैं वो उनकी मिडफील्ड में हैं. दैट इज़ मूसा, एडम्स एंड मैकेनी. एंड आई थिंक किसके इंग्लैंड के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा खेले थे टिमोथी विया, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दैट राइट. टिमोथी विया जो उनके राइट विंग में है, लिल के लिए खेलते हैं. तो he scored against Wales also, if I'm not wrong. अच्छा उनका गोल था. ओके. सो ये जो मिडफील्ड है ना, ये काफ़ी मेरे को लग रहा है ये अपनी क्रिएटिव एबिलिटी यूज़ कर सकती है. ऑन द अदर हैंड वी ऑल आर फेमिलियर विद डच डिफेंस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो. एंड अभी भी अगर आप ये देखो कि इस पूरे टूर्नामेंट में कोडी गैप को ही एक बड़े नाम बन के आए हैं. वैसे तो क्लासन का ये वाला टूर्नामेंट अच्छा था, बट कोडी गैप को परफेक्ट जैसी गोल स्कोरर वही बने हैं, तो सबके निगाहें उन पर ही है. तो फिर वही है कि यार अभी भी जितना हम इस डच टीम से एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ी और क्रिएटिविटी वैसे निकाल दो वगैरह, तो अभी इतना आया नहीं. ऑन दी अदर हैंड यूएसए भाई, आप
एशियन टीम्स पे हमने इतनी लंबी बात करी, यूएसए तो मेरे लिए भी एक सरप्राइजिंग फैक्टर, एक सरप्राइजिंग टीम बन गई कि भैया दे हैव कम दिस फार, एंड आज काफी टाइट गेम हो सकता है, एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर यूएसए आज जीतती है तो। Okay, so it's for a change, it's Alex with an unpopular opinion today, and Ashish who is going with the Netherlands over here. और डेंजर मैन की अगर बात करें फ्रॉम नेदरलैंड्स एंड इट विल बी कॉडी गैक्पो, लाइक एलेक्स हैज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट, 29 अपीयरेंसेस में ही हैज 17 गोल्स एंड 18 असिस्ट्स एंड 35 गोल इन्वॉल्वमेंट्स फॉर क्लब एंड कंट्री इन 2022 एंड 2023. सो इट्स बीन अ गोल्डन रन फॉर गैक्पो, और वो आई थिंक ये डेविड विया वाला सीजन जा रहा है इनका कॉडी गैक्पो का, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं. और आशीष मेरे हिसाब से मिडफील्ड बैटल विल डिटरमिन द रिजल्ट मेरे हिसाब से, बिकॉज़ यू डिजोंग एंड डिपे को आप फिर लोग कंसीडर नहीं कर रहे हो. ही हैज बीन the talismanic of this team in terms of goal scoring, and he's just few goals away from the top scorer for Netherlands team. So, and as I said, till now looking at big players are standing up for their teams. Dipe has to stand up today, you know, for his team. I think we need the Netherlands on the win, just like Pulisic for USA. Dipe need to perform well. I think that's what they hope for. And I think let's move quickly to Argentina game now. Well, so anthems हो चुके, favorites बोल दिया आशीष के हिसाब से Netherlands, Alex के हिसाब से USA. What about you? आई थिंक मैं यूएसए के साथ तो ऑप्शन नहीं, मैं यूएसए के साथ जाना चाहता हूँ. आई थिंक यूएसए आर गोइंग टू पॉप अ सरप्राइज. आज हो जाए सॉकर हो जाए, आज सॉकर होने वाला है मुझे लगता है. तो एनीवेज सॉकर रूस के बारे में बात करते हैं अब, व्हिच इज ऑस्ट्रेलिया हु टेक ऑन अर्जेंटीना, द फेवरेट्स अगेंस्ट द अंडरडॉग्स एंड द नेशन फ्रॉम डाउन अंडर. सो इट्स गोइंग टू बी अनदर एपिक राउंड ऑफ 16 फिक्सचर. और एलेक्स तुम्हारे से शुरुआत करते हैं. तो शुरुआत जो थी अर्जेंटीना की बहुत ही ख़राब हुई थी, लोग काफ़ी हंसे थे, काफ़ी मीम्स बने थे, अभी तक बन रहे, और वो सऊदी अरेबिया के साथ थी. बट जिस तरीके से उन्होंने ट्रांजिशन किया अगेंस्ट मेक्सिको, दे वर फाइन, बट अगेंस्ट पोलैंड they completely blew Poland out of the park with ball possession, with the tenacity, intensity, जिस हिसाब से प्रेस कर रहे थे. I think it was top notch. So they are peaking at the right moment. Do you think कि आज ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी परेशान करने वाले हैं अर्जेंटीना? परेशान ना वो बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जैसे सऊदी अरेबिया के, ब्लेस यू, जैसे बिल्कुल ही सऊदी अरेबिया ने उनको करा था कि बिल्कुल जिस ऑफसाइड ट्रैप सेट करके और अपना डिफेंस इम्पैक्ट पूरा जैसे नहीं कॉम्पैक्ट कर लो, आपको डिफेंस लाइन अपनी कुछ खास छेड़नी नहीं है, एंड फ्रस्ट्रेट करो अर्जेंटीना को. ये उस केस में फिर जीत सकते हैं कि उनको ना बॉल पे ज्यादा आने मत दो, अपने आसपास ही थोड़ा बॉल घुमा लो, ज्यादा फिजिकल हो जाओ अर्जेंटीन प्लेयर्स के साथ, तब जाके अर्जेंटीना के पास चांस, ऑस्ट्रेलिया के पास चांस ज्यादा बन सकते हैं. ऑन द अदर हैंड भाई आई वॉन्ट अर्जेंटीना टू विन. मैं नहीं चाहता कि जो मैंने बोला हो वो हो रहा हो. तो हाँ मेरी बात ना सुने. हाँ मेरी बात ना सुने. तो जो अर्जेंटीना है फिर भाई वो आई थिंक यूटिलाइज, अगर ये हो रहा हो पिच में तो आई थिंक वो बिल्कुल ही काउंटर पे यूटिलाइज करना चाहिए अपने चांसेस को, एंड उनको कोई भी चांस आज छोड़ना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए. सारे के साथ जितने भी हाफ चांसेस हो रहे हैं दे शुड बी लाइक ऑन देयर एज कि हाँ गोल निकालना है, गोल निकालना है. आशीष, इफ यू टॉक अबाउट अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, हमने दो अप्रोचेस देखे थे दो अपोजिशंस के अगेंस्ट अर्जेंटीना. एक था फिजिकल अप्रोच, यू नो, विनिंग द 50-50, विनिंग द मतलब पूरा इंटेंसिटी के साथ खेलना, विच वॉज सऊदी अरेबिया. दूसरा था पोलैंड का, विच वॉज मोर कंजर्वेटिव, पार्किंग द बस, यू नो, वेटिंग फॉर द काउंटर पंच. तो आज क्या लगता है आपको ऑस्ट्रेलिया किस अप्रोच के साथ जाएगी यहाँ पे अर्जेंटीना के? आई थिंक इफ मैं एक थोड़ा सा बोल्ड चीज बोलता हूँ, इफ ऑस्ट्रेलिया वुड हैव प्लेड अर्जेंटीना इन द फर्स्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड कप, they might have defeated Argentina, right? But now Argentina is coming as a better team, better unit. You know, the last game they won without any major goal contribution from Messi. You know, but you know Australia has come from a very tight group also. You know, they have worked hard to get this match, and I think they will be very proud of playing, you know, just like Cameroon was very proud yesterday by playing Brazil and beating them. But this game will be not that easy, just like Cameroon had. But Cameroon also worked hard for 90 minutes to win that game. Yes. Australia I think their tactics should be stay in the game as longer as possible. You know, stretch Argentina team, frustrate them. Yeah. But should not be parking the bus. You know, try to keep the ball, have some position, have some relevant position, and then frustrate Argentina. You know, so Argentina is not a team who like to keep a ball a lot. By the way, they don't play that position style of football. Yes. You know, which we have seen. They also sometimes like to play that quick transition. two passes over the top or from Messi vertical balls. I think if Australia can keep some position, you know, and be resilient as a defending unit,
And I think if Australia, we are resilient for the defensive unit, they will have a chance against this Argentina team. Their defense is not good, and I have to see that who they play today. Right. If they play Martinez, it will be Romero. Romero and Otamendi are two defenders. If Australia can isolate them, can put them one-on-one against their attacking player, Australia have a good attacking unit, by the way. They have scored against France. They have done well in the next two games. I think if they can somehow isolate these two full defenders, one-on-one or even a two-on-one sometime, I think Australia will have a chance to score that goal. And this is now knockout games. Every team is here because they belong to this level. Right. You can't say that Argentina is Argentina because they are the legendary team at the international level. They have 99% to win this game. I don't think so. Either 60-40, 60% Argentina or 40% for Australia. If they somehow keep themselves compact, don't allow Messi to be playing in between the lines. Right. Don't give that space for Messi to play between midfielders and defenders. Let Messi struggle. Let Messi sweat more. And I'm sure Messi can still make difference. Right. I'm not saying, but they can keep a finger crossed. Yeah. If they can keep Messi quiet, वो last match में भी हुआ. The opponent team kept Messi, but the other player scored. But see, वो risk थोड़ा सा लेना पड़ेगा. And if Australia can do that, I have a gut feeling that Australia can still make an impact. And 40% के chances हैं मुझे लगता है आज के match में. Right, like Ashish said that the focus will be on Messi, but here's where Argentina's one of the key men, McAllister, comes into play, because in the last game he had the most number of touches for Argentina and he also eventually scored a goal, could have had a brace as well. But if there's a danger man from Australia's end, Alex, that's Matthew Leckie. एक गोल और एक असिस्ट उनका इस टूर्नामेंट में है, and he's one of the only 3 players from Australia to have a goal and an assist in a single tournament. Tim Cahill, he scored 2 goals and 1 assist before, and before that it was John Alusi in 2006 with 1 goal and 1 assist. So yes, it's a big night और काफ़ी अपसेट्स हमने देखने को मिला और किसी के पास भी जो है परफेक्ट रिकॉर्ड इस वर्ल्ड कप में अब तक नहीं है. कोई भी टीम अब तक जो है एलेक्स 3 गेम्स लगातार नहीं जीती है. अगर किसी के पास है अनबीटन रिकॉर्ड, सो दैट इज मोरक्को, नेदरलैंड्स एंड इंग्लैंड. तो जैसे कि मैं कह रहा था, एक प्लेयर मैं और हाईलाइट करूंगा, वली आपने जो नाम नहीं लिया, Aaron Moy, yes, from Australia's midfield. The midfield, and he is there, one of the main player in that team with the experience he had. He had played 3 Premier League seasons in his life, and not a bad Premier League record, by the way. He has scored 9 goals in Premier Premier League. Brighton, right? Yeah, I think he played. If I remember, I think he played. I have to just check, but I think I was checking. He was in Championship, got promoted with a team, if I remember correctly. I think he played for Brighton. Yes. And before that, he played for Huddersfield Town in the Championship. I remember that. And actually was signed by Manchester City from Melbourne City, which are the sister club for the Manchester City. Yes. And he was that good for Melbourne City in that 56 game. He scored 22 goals. That he was signed by Manchester City, then loaned back to Huddersfield Town for a Championship in 2016-17. He scored 4 goals. Then Huddersfield Town signed him permanently. For them, in 2 seasons, he scored 7 goals. Then Brighton signed on loan him from Huddersfield Town, and I think he did well in those 2 seasons for Huddersfield Town in Premier League, in Championship. I think उसके overall देखोगे तो 9 goals हैं and 6 assists हैं. As a midfielder, a decent return, and I think he will the man who might make that difference in midfield for Australia in this game. So that's a very valid point made by Ashish, but Alex, as we just saw और जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, इतना ओपन वर्ल्ड कप हो रहा है और क्या बोल रहे थे आज यूएसए जो है, yes, he was onside. Pulisic had a one-on-one opportunity. He could have scored the first goal for USA. तो मैं यही कह रहा था. I think the surprise is Pulisic went with the left foot. Yeah. I think he had enough time to maybe turn his body and go with the right foot. A very good save. तो एलेक्स मैं यही कह रहा हूँ यार, ओपन टूर्नामेंट है, अंडरडॉग्स मेरे हिसाब से अंडरडॉग्स ही फेवरेट्स के तरीके से आ रहे हैं इस गेम में. तो यार, but see, at a round of 16 nobody is underdog, I will say. Yeah. Everybody is there because it's all about that one night. No, it's now 90 minutes. Can you cope up for 90 minutes? That's all about. Can you show the quality for 90 minutes? Can you play to your own potential? Right. I think that's the important thing. If you can play to your potential, you will win this game. Any team. I will say nobody's favorite at the round of 60 anymore. So, Alex, जाने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ about the World Cup so far और जो मैचेस अभी देखने को मिलेंगे? Touchwood, Argentina. Touchwood, Argentina. That's it. Alex, Ashish, anything from your end? I think I will not say that Argentina will lose this game as a 60% Argentina chance, but I hope Socceroos, Australia count on those 40% chances, try to attack, make Argentina frustrated. It's as I said, if they can stretch Argentina for 90 minutes,
Australian player fitness is also good. They come from sporting country, and I touched upon Australia culture, sports culture earlier also in previous videos. And if they can keep those 90 minutes tight and compact, I think they have a chance to maybe create another upset. We can't say upset because we're saying no one is favorite. So who are you predicting for Argentina, Australia? See, I will say Australia, फिर Argentina जीत जाएगी, फिर बोलेंगे फिर आधी मिनट आएगा. You back your guts. It's fine. Back your gut. I think we might see a giant killing today. Okay, so he's going with Australia. So Netherlands and Australia, do teams to advance. Maybe I don't see. It's not that I don't like Messi. No, it's fine. It's Messi might win you this game. Right. But I still feel the Argentine overall team still not good enough to win this World Cup. I still that feeling, irrespective of the last game they've done. And if they don't play Martinez, the Licha Martinez for Manchester, then they're definitely not doing this. So, Alex, I think tomorrow end say USA and who was it? Argentina, right? So okay, it's vice versa from Ashish and Alex, and yeah, USA. It's been a positive start from their end, and definitely Louis van Gaal will be worried. तो आप ये मैच ज़रूर देखिए. इसके बाद जो है 12:30 बजे, जैसे कि मैंने बोला, अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के भी मैच है. वो भी ऑन पेपर आपको लगेगा कि शायद एक आसान गेम है, बट इस वर्ल्ड कप में कोई भी आसान गेम नहीं हो रहा है. हर टीम जो है अपना रुतबा यहाँ पे दिखा रही है. सो कीप वॉचिंग द वर्ल्ड कप. Keep watching Khel Now for more World Cup related content. This is Alex, Wali and Ashish signing off.